So Mr. Asif is from the Gurmani School of Humanities and Social Sciences, LUMS. He has taught not just in LUMS, but in PU, PCL, Civil Services Academy, and Mackal University as well. He's a teaching fellow with more than 30 years of experience. He's the honorary fellow at Al Maurid. I hope I'm pronouncing it right. The fellowship is the highest research position rank, and he has also been a member of academic review committee in Al Mawrid. He has developed language teaching curricula at Al Musab School, and he has vast publishing experience. I don't think I can do justice to his introduction in just a minute or so. So please, over to you, Mr. Asif. Thank you very much. I think I'm supposed to turn on my video as well. That is totally up to you. Okay. So could the participants also turn on their videos, because it kind of helps in more interaction? It would be useful. We generally advise the participant to keep it off. So if there's some internet connectivity issue, okay, that can be avoided. Okay. I mean, so if they're snaring at me, I wouldn't know. If you want, I can keep my video on. Yeah, I mean, at least. Yeah. I know, Asif, you make a very good point that you would like to sort of connect with your participants. The only problem we have seen is that usually internet connectivity makes any connection for them. Right now, I can see Ali. Happy. Please. Ali Mushtaba smile, but I would like to see. No, I was going to request the participants to open up their videos. But we will keep them muted for the time being till we are ready to ask questions, because sometimes this background noise. Where I see Kashif Raza from Sakhar. I think it's a great. I see Seemal Jalani. I see Arfin, Anish. Is happy to see other live faces, and I think it adds a lot to the ethos of the class. But we will leave it to choice. You can persuade them, Asif, if you want to. Okay. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. All right. Thank you for the introduction. The school, by the way, was a Musab for which I worked for a number of years to develop its pedagogy and curricula. Anyhow, coming to the topic itself, I should like to begin with why literature review in any kind of research, even scientific research, is important. And it's easier said than done, because the general idea is that there is some mandatory reading, and you just go through it, you just make a list and you begin your research. But in reality, when you do your research, we all know, I mean, all of you are researchers already, you've had your experience, we're just sharing our ideas and our experiences. I have this little advantage of having worked in different disciplines. My initial background was in finance and business administration, but then I went on to the study of hermeneutics and legal history. So entirely different area, focusing on working, focusing on textual studies. So in a sense, my basic focus is on work as a textualist, where I deal with about 6 different languages to study ancient texts. But that training also helps me to do legal history. And the variety of text that one comes across makes one realize how important the hardcore study that is somewhat atavistic classical way of studying. और जिसको शायर ने कहा ना कि तुम्हें चाहिए, शायर से पूछा तुम्हें चाहिए क्या, तो उसने कहा कि किताबियों फरागतियों किताबियों गुशाई चमन, that all I need is a book and a corner in the garden and some luxury to study.
So that aspect of research with the post-logical positivism focus on empirical research has somehow faded. And I mean, that fashionable aspect of research where you're conducting surveys, where you're doing, we're talking to people, interviewing people, gathering data. In science, obviously, there's a lot of experimentation, there's a lot of testing. Those aspects seem to give research the veneer of profundity, which might be justified in its own particular context. But the literature review aspect is certainly not superficial. It's certainly not something that can be just brushed away as merely a mandatory obligation that one has to go through and then come to the real thing. Sometimes, in some fields at least, and in certain cases at least, it might even assume the primary importance. So, what really is it all about, and why is it important? And then the third question is, how do you really go about it? Finally, the last question would be, how do you engage with the texts? Because engaging with texts is also something that Pakistani universities do not focus upon, uh, especially in social sciences and humanities. I have done very little research in pure sciences. Recently, I published 2 papers on artificial intelligence and hermeneutics, which was a combination of humanities and social sciences with pure sciences, which is quite the in thing at MIT. MIT is taking the lead in combining disciplines of humanities with science, because artificial intelligence does depend, developing artificial intelligence does depend to a great deal on an understanding of hermeneutics. So I hope everybody understands what hermeneutics is. Hira, for instance, would you um, mind explaining to us what your understanding of hermeneutics is? Because it's used in different senses. Hira Iftikhar. I picked up that name because it's my namesake as well. Hira Iftikhar यहाँ पर मौजूद है गालिबन, या कोई और बताना चाहेगा? Asif, I've heard you say it many times and still I forget. So if I am not good at it, I don't expect anybody else will remember. So could you kindly sort of Yeah, explain? yeah. It's, So I have looked it up so many times and I fail to remember. yeah, I hope that my board is visible. I'm sorry, I'm old fashioned. I never make PowerPoint presentations. I never did that at McGill or even in international conferences. So I like using my board. It Uh, it is something to do with the vocabulary and use of language um to research or in research. that's Musarat. Musar Shahid. Okay. Yes. So the word comes basically from the Greek god, in Hermes. Hermes, who was the Yes. winged messenger of gods, who would make the unintelligible language of gods decipherable and intelligible to the mortals. And from that, the idea of how the divine scripture could be, then uh, explained and interpreted to understand what is known as the authorial and intentionality. Originally, in the Western academia, the idea of deciphering, the intentionality of God in his message, because as many of you would know, initially in the Catholic Church, the idea was that the authorial intentionality, since it was divine in the Logos, in the Word, which was divinely revealed or divinely passed on, and the Logos itself was a character of God,
and it was divine, therefore. Pretty similar to our issue of Khalq-e Quran, discussions and discourses amongst the Mu'tazilites and the Asharites. So it was pretty similar in many ways, and if not exactly the same. And the idea that this intentionality could only be deciphered by somebody who had some kind of divine sanction to do it, because it's a very, very powerful tool. Hermeneutics, in a sense, the art and science of interpretation of text, is perhaps, in a certain sense, the most powerful tool that human beings have, because it's all through the power of interpretation that discourse and power structures are created. अब देखें ना, मतलब आप किसी भी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, good, bad, ugly, beautiful, good woman, bad woman, who's a good woman, who's a bad woman. So these are powerful statements once they're accepted and they have the force of authority and power. तो वो बहुत ताकतवर चीज बन जाती है. ताजमहल, ताजमहल को आप देखें जी, इसको अगर इंटरप्रेट कर, you ask many of my Goras friends कि जी क्या, what does it signify for you, and they would say love, and amour, love of an emperor. But then in comes Sahil Udyanvi, and he says कि यार ये कौन सा लव था, 13वें बच्चे से मर गई बेचारी, और थी भी 8वीं 9वीं बीवी. तो वो बादशाह साहब को पैसा भी बहुत था, 22,000 मजदूर लगाए रखे उन्होंने, और वो बेचारे मरते रहे धूप में, और सबसे बड़े आशिक ये बन गए. तो वो उसको नहीं उस तरह से लेते और वो रीइंटरप्रेट करते हैं, तो वो पूरा का पूरा नैरेटिव ही बदल जाता है. व्हेन ही सेज के मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या माने, सब्त जिस राह पे हो सतवत शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या माने. तो वो कहती है अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे. ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे. एंड the whole narrative changes. It's the power of interpretation. The same applies to constitution. The same, initially the science emerged, the science and art of hermeneutics emerged in biblical studies, but then in comes, Martin Luther, not the black activist, the German, the German priest, and he realized that there were logical contradictions in the consensus of the Catholic Church, because if to his mind, and he was a very pious person, he did not really want to make this protest, but by virtue, in his own words, by virtue of his conscience, he could not reconcile with the idea that God could give verdicts that would be logically contradictory. ह्यूमन माइंड तो हमारा कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर सकता है, लेकिन खुदा कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहा है. एंड ही सेड इट्स सेफ फॉर मी to rely to go by the dictates of my private conscience, and I would like to study the text myself. And I have the training, I know Greek and I know Hebrew and I know Aramaic, so I can study the text myself. And I would not like to part from tradition, from those, but if it's not reconciled, then I like to go back to the text. And that kind of focus, that Protestant revolution then created a focus. There was focus on the text itself. What Jacques Derrida, the famous deconstructionist, he probably wouldn't have liked to categorize himself as a postmodernist, but nevertheless, one of the big names under the rubric. And this created in the West what was known, what Jacques Derrida would quite often call logocentric deontology, or logocentrism. I sometimes call it logocentric deontology. And that's very relevant when you do humanities or social sciences research in the Pakistani context, or even in many other Christian contexts, because the idea is that this text is revealed
It's infallible, it's unaltered, and the intentionality of God is final, it's non-contradictory. So anybody who comes up with that idea कि जी कुरान में मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि जो अनिश ने इस वक्त अटायर पहना हुआ है या डॉक्टर एक तो यहाँ ये थोड़ा सा स्क्रीन इसकी एक मिनट हाँ जो डॉक्टर सीमल जिलानी ने लिबास पहना हुआ है ये गैर इस्लामी है और बिल्कुल हराम है तो as soon as somebody says that with authority and is afforded that authority by society, you know, it becomes a very, very dangerous statement. You know, will of God, wo, crusades bhi hote hain कि it's the will of God. So anybody who claims that has a lot of power, the power of interpretation. Taj Mahal को आप exploitation बना दें, आप उसको symbol of love बना दें, एक लिबास को decent बना दें, वो दूसरा आके उसको indecent बना दें. So ultimately, we societies that are founded upon some kind of logocentric deontology. Deon comes from the Greek word. Deontology comes from the Greek word deon, rules. So you know, most of our ethical issues that emerge for us are in most traditional societies based on this kind of logocentric deontology, because there's the Quran, the Bible, you know, Vedas, or in the modern nation state, as Wael Halak, the famous professor at Columbia, who used to be my professor as well, he argued that even the nation state, that we modern nation state, has its own Bible, has its own Quran, which is in the form of constitution, constitutionalism. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्ड है उसका भी जो उसमें भी हम बात करते हैं ऑथोरियल इंटेंशनैलिटी की. और ये लोगोसेंट्रिसिज्म जिसपे क्लासिकल hermeneutics बेस्ड है, Schleiermacher and others who are associated with classical and romanticist hermeneutics, उस दौर तक तो गुफ्तगू यही होती थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से भी कि what was the intentionality of the founding fathers of the constitution. But then in came other people who began challenging these ideas as well. यानी मार्टिन लूथर का जो ब्रेक था उसने पूरी दुनिया नई क्रिएट कर दी, नए नैरेटिव्स पैदा हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस पर बेस्ड थी, सोशल साइंसेज रिसर्च उससे पैदा हुई. आपकी ये यूनिवर्सिटीज जितनी हैं जो डेवलप हुई, यू नो, वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स जिसकी हम बात करते हैं वो उधर से ही डेवलप हुई सारी. Like there was, for instance, there was one verse which became very, very important in the Bible. It was, it's called the Eye of the Needle verse, and it was a nightmare for you know the industrial bourgeois, because or bourgeoisie, बिकॉज जैसे जैसे लोग अमीर हो रहे थे तो चर्च तो बुनियादी रूप में कहता था कि देखें जीसस क्राइस्ट ने ये कहा था बाइबल में एक यंग आदमी को जो बड़ा अमीर था कि इट इज एज डिफिकल्ट फॉर अ रिच मैन टू पास थ्रू द गेट्स ऑफ हेवन एज फॉर अ कैमल टू पास थ्रू द आई ऑफ अ नीडल. सो इन द फ्यूडल स्ट्रक्चर जो उस जमाने में था, द आइडिया वाज कि जी आपको असल में आप कमाएं जरूर लेकिन कमा के आप पैसे खुदा की राह में दे दें, विच वाज द चर्च. किंग को और उसके फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स को, फ्यूडल लॉर्ड्स को सॉरी, पैसे आप इसलिए दे दें क्योंकि वो चर्च को प्रोटेक्ट कर रहा है और सारी किंगडम ऑफ गॉड को प्रोटेक्ट कर रहा है. सो द मर्चेंट बेचारा, सौदागर जो है बेचारा, वो कमाता था और वो इनको पैसे फ्यूडल स्ट्रक्चर में, और वो एरिस्टोक्रेट्स और वो सारे. एंड व्हेन दैट वाज चैलेंज्ड बाय मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट एथिक्स में कि नहीं आप यू हैव अ ड्यू, जिसको प्रोटेस्टेंट एथिक्स में बयान किया जाता है, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्स. अभी तक मैं देख रहा था कि बिकॉज आई टीच इन द बिजनेस स्कूल, सो आई हैव टू
keep getting Harvard business cases for my MBA and business classes at LUMS. तो मैं देख रहा था अभी तक हार्वर्ड में इस इशू के ऊपर अभी तक बहस होती है. इकोनॉमिक्स की आप किताबें अगर आप टेक्स्ट बुक से थोड़ी सी आगे चले जाएं, you read top notch economists directly, तो वो अभी भी सूद के बारे में बहसें करते हैं क्योंकि फंसा हुआ है वहां पर, इश्यूज फंसे हुए हैं, रीइंटरप्रिटेशंस आर रिक्वायर्ड. अच्छा, आप रिलीजन के और उसके ट्रेडिशन से बाहर निकले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हर बंदा जानता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके पीछे बहुत ज्यादा रोल है प्रोटेस्टेंट एथिक्स का, और किस तरह से वो कैथोलिक आइडिया से निकल के इस आइडिया पे पहुंचे थे मार्टिन लूथर की रीइंटरप्रिटेशंस की वजह से कि हमें वी हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स ब्यूटिफाइंग गॉड्स वर्ल्ड इन on earth just as we are supposed to beautify it for God in the hereafter. So the whole idea of Protestant ethics was कि चर्च को देने के बजाय डायरेक्ट पैसे खर्च करो. ऑक्सफोर्ड वगैरह और ये कैम्ब्रिज की सारी यूनिवर्सिटीज इन्हीं इंडाउमेंट से पैदा हुई थी क्योंकि दे स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी डायरेक्टली रादर देन स्पेंडिंग on those things. So what I'm trying to say is that from that classical hermeneutics of romanticists where they were looking just at the text itself to decipher the authorial intentionality, और ये जो 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 साइंसेस डेवलप हुई इंटरप्रिटेशन की, उन्होंने इनिशियली तो रिलीजियस स्टडीज, फिर लिटरेचर, फिर लॉ, फिर मैनेजमेंट और यहाँ तक कि प्योर साइंस को भी इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया. यानी प्योर साइंसेस में भी जब डिस्कशन की जाती है तो हाउ यू डिफाइन थिंग्स, हाउ यू डिफाइन जीरो फॉर इंस्टेंस, व्हाट इज जीरो, व्हाट इज वन. I mean, why is this one board and not a combination of different parts that combine it? That's just my categorization, to use Aristotelian terms. तो वो categories में मतलब जो interpretations हैं वो science में इतना matter करती हैं, और वो text based होती हैं. जिस आप स्टीफन हॉकिंग्स को आप ले लें, उसने अभी जो मरने से पहले जो बात की थी कि उस दोबारा वो जो लुई पास्टर के ज़माने में जो साइंस की दुनिया में मसला पैदा हुआ था, वो एक तरह की डिबेट दोबारा शुरू होगी साइंटिफिक वर्ल्ड में नथिंगनेस की, कि कैन लाइफ इमर्ज आउट ऑफ नथिंगनेस. तो आपको, आप में से बहुत से लोग जो साइंस के वो मैं एक्चुअली प्रोफाइल रुखसाना देख नहीं सका, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम कि कितने साइंस के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन साइंस के जो स्कॉलर्स हैं वो शायद उनको याद होगा जो लुई पास्टर के ज़माने में स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बहस हुई थी. वुड एनीबडी लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट दैट वाज? लुई पास्टर के ज़माने में वो साइंसदानों ने डब्बे वब्बे बंद करके शीशे के, उसके अंदर वो पैस्चराइज नहीं होते थे, एयर टाइट नहीं होते थे, तो दे showed at Ecole Normale, which was one of the most prestigious, schools of science in Paris. So वो जब उन्होंने दिखा दिया कि जी इसमें लाइफ पैदा हो जाती है, तो वो spontaneous generation का idea, and was the rage then because they said कि जी हमने साबित कर दिया life can emerge out of nothingness. So the implication was that you don't need God and you don't need all this baggage of tradition, and it really creates a lot of emancipation for human beings. You form your own morality as you like. तो वो उसको खैर पास्टर साहब ने आके पैस्चराइज किया, तो वो नहीं पैदा उनका हुन करके वो वो सारा जो इंपीरियसिज्म एक तरह का था कि जिसमें साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, वेरीफाई हो रहा है, लेकिन दैट वाज थ्रू अनदर एक्सपेरिमेंट, in Popperian terms, falsified in a sense. हॉकिंग्स ने बात जो की वो definitions के थ्रू की, उसने कहा nothingness से पैदा, but that nothingness, it's so important to study the text carefully and to understand what is happening, because that is where the power really comes from. The power of your research, the power of your thinking, the power of your analysis comes from your engagement with the text. So अब उन्होंने कहा कि जी nothingness, but that nothingness is not the philosophical absence of presence. It's not the same thing.
because this nothingness has properties and it has an energy field. He might have called it X or Y or Z. A Romeo called by any other name would smell as sweet were it not a Romeo called. So, you know, the point is कि वो उन्होंने पूरी hype create कर दी, लेकिन it was entirely different conception of nothingness. So when you talk about these aspects of interpretation, an important field in which we all need to educate ourselves is how to approach the text. बहुत अब तो बेशुमार किताबें आ गई हैं. जब मैंने पढ़ना शुरू किया था आज से 20 साल पहले, तो उस वक्त तो वो MIT के मैं आर्टिकल्स देखा करता था, क्योंकि अदरवाइज most of this stuff was in other languages, because mostly the field began with European philosophy. फिर आस्ता आस्ता अमेरिका में बहुत लोग आ गए. अब तो ट्रांसलेशन सब चीजों की मौजूद हैं, and there are easier articles are available, even textbooks on hermeneutics which explain things to you easily. So from Schleiermacher, you know, the idea that the text is sufficient into itself, कि text ही से आप पढ़ के आप कुछ समझ सकते हैं सब कुछ. Then in came other people like Gadamer, for instance, जिन्होंने कहा कि नहीं, आपको text का context outside the text भी चाहिए होता है. आप जब पढ़ते हैं कुरान में कि फजरबु हुन्ना के बीवियां अगर नशूज पर उतारें, रिबेलियन पर उतारें, तो फजरबु हुन्ना, उनकी पिटाई भी कर दो. तो it has to be understood from outside the context. What was the context outside the text? Amina Wadud in feminism, you know, although she doesn't claim to be a feminist, लेकिन वो लोग भी ये बात करेंगे कि जी टेक्स्ट के बाहर एक पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसके अंदर रखकर आपको जुमलों को समझना पड़ता है कि क्या क्या बात की जा रही है. कुरान मजीद ने मिसाल के तौर पे जब ये कहा कि आइदु मस्ततातु मिन कुव्वति व रिबातिल खैल तुरहबूना बि उदुवल्लाहि व उदुव रसूल, तैयारी करो घोड़ों की, नेज़ों की और घोड़ों की, और तो वो ऑब्वियसली ताकि तुम्हारे और अल्लाह के रसूल का दुश्मन, अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन तुमसे डर के रहे. तो आज क्या आप घोड़े और नेज़े करेंगे, या द इंटेंशनैलिटी वाज वेरी डिफरेंट. It has to be understood in its context. ये आमतुल वरूद में, जिसको हम लिटरेचर में कहते हैं, बात की गई थी. तो इसमें जो हिस्टोरिकल डायरेक्टिव है वो और है, और जिससे इंटेंशनैलिटी निकल रही है, दैट्स यूनिवर्सल. सो इन मॉडर्न टाइम्स दैट वुड बी अप्लाइड थ्रू missiles and what have you. So these ideas have been appropriated, used by some of the best thinkers, ranging from, you know, people like Shah Waliullah, Shah Abdul Aziz, जिन्होंने पूरे constructs change किए. हमारे जो आबाउजदाद हैं हिंदुस्तान में, उनका classical notion ये था कि जब अंग्रेज की हुकूमत आ गई है, तो नॉन मुस्लिम कंट्री में परमानेंट रेजिडेंट की हैसियत से रहना जो है हराम है, वरना आपकी मौत भी हराम की मौत होगी. That was reinterpreted by people like Shah Abdul Aziz, and most of our ancestors, you know, decided to stay here so that Dr. Rukhsana Zia could hold this conference. But this kind of interpretation resulted with a shift from just the text to the text outside, with people like Gadamer and others. और फिर मार्क्सिस्ट आइडियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, पावर डायनामिक्स है, वो किस तरह रोल प्ले करता है, which also had an impact on feminist discourses. People like Amina Wadud, Asma Barlas, वो टेक्स्ट को पढ़ रही हैं. मैं अब मिसाल अगर लें, कुरान मजीद वही टेक्स्ट है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका डिफरेंट है, तो दे आर इंटरप्रेटिंग इट इंटायरली डिफरेंटली. क्वेयर डिस्कोर्स अब पैदा हो चुका है, जिसपे डिस्कशंस हो रही हैं. And then you move on to, you know, people like moving on from Lyotard, Lacan and Foucault and Jacques Derrida, जिन्होंने पूरे के पूरे तस्वुर ही बदल दिए देखने के, और you enter the stage of postmodernism. मॉडर्निज्म में भी जो साशो वगैरह का काम है, that was important to see structures in our statements, and to see how language works, and to understand it vis-a-vis certain, you know, structures of language. लेकिन postmodernism तो उससे भी आगे खड़ा हो गया, और उसने जाके ये कहा कि जी ये जो interpretation है,
and obviously there was a lot of role to play here with philosophies as existentialism. उसका क्या impact हुआ, वो एस्केटोलॉजी की बात आखिरत की बात करने में कहा जी हेयर एंड नाउ की बात करो, और पोस्ट मॉडर्निज्म में लाइक फॉर इंस्टेंस जो डगीडा के आइडियाज हैं डिफरेंस के, the word is difference, not difference. So he combined differ and differ together to come up with this word in French, where he meant. Could anybody, if anybody has read Jacques Derrida, could anybody tell me a little bit about what difference, what the idea of difference is, and how it would impact your textual studies, your engagement with text? Asif, if I may comment, the way you talk about this session in engaging with the text and how you incorporate so many disciplines and so many writers, I'm not very sure that many of us have read these because they were not a part of the discipline per se, and you know how we are taught. So I think इतने मुश्किल सवाल करने के बजाय आप खुद ही जवाब दे दें। नो वरीज, ये इतना मुश्किल, सिर्फ जबान ही मुश्किल होती है। वो हमने सब वो आमिर खान की वो मुझे अच्छी तो नहीं लगी थी मूवी, लेकिन उसने अच्छा पॉइंट उसने कहा यार वो बातें हमारे सब अंदर मौजूद होती हैं। वी ऑल यू नो एज ह्यूमन बीइंग्स it's all in us, but we haven't kind of just defined or explored our own selves. So the idea was that इसको अगर simple terms में वो बड़ा hype है। Postmodernism is the really you know in thing in the West, because वो जो emancipation चाहिए even constitution से, इंसान फितरतन चाहता ना कि मैं आजाद रहूं, अब पाबंदी ना हो मेरे ऊपर, I should be able to do whatever I want. तो ये तो फितरी ख्वाहिश है इंसान की। तो वो बात करते हैं कि जी ये जो टेक्स्ट की ये जो अथॉरिटी है ये कभी भी डिफिनिटिव नहीं हो सकती. इट कांट बी डिफिनिटिव. व्हाई? बिकॉज द वर्ड in its meaning will not only differ, it will be deferred as well. मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब ये जुमला दुनिया भर में हैप्पी बर्थडे टू यू के अलावा सुना जाता है, आई लव यू. आई लव यू, व्हाट डज इट रियली मीन? यू नो, जब मदाम सिमोन दे बिगवा और जॉन पॉल सार्tre का जब when they defined their existentialist love affair, so it was not, the idea was not till death do us part, but till we find it relevant. So I love you had a very, very different connotation from the Christian conception of till death do us part. तो इसी तरह अगर मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं यहाँ पर मौजूद कहीं पर और मैं उनसे कहता हूँ कि बेटे मैं जा रहा हूँ, बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो जरा उनको शो देम अ गुड टाइम. अब व्हाट शो देम अ गुड टाइम, व्हाट डज इट मीन? यू नो, मतलब मेरे गेस्ट अगर मेरी आल्मा माटर एचएसएन से आ रहे हैं तो क्या पता उनको गुड टाइम वुड मीन शातो लाफिट्स रोथस्चाइल्ड विंटेज, you know, cognac served in cognacs. Now you're talking blasphemy, actually. You better watch out, Asif. But if my friends from the Tablighi Jamaat are there and they serve the same thing, that would not be good time for them. So you know, things would differ. They would depend on the context. So reader response theory के reader जो है वो खुद बाज़ बार decide कर रहा होता है, ला तक़रबु ज़िना, ज़िना से दूर रहो. तो मुझे अभी तक याद है जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गया था, बिफोर आई वेंट अब्रॉड फॉर माय स्टडीज, तो मैं एचएसएन से निकल के आया था और मुझे अभी तक याद है कि एक सेक्शन होता था वहां पर हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कि जहां पर वो उसमें सिर्फ टॉपर्स बैठते थे. तो उसमें उसमें 20-25 ख्वातीन भी होती थी और बाकी सारे सेक्शन लड़कों के थे. तो वो बड़ा हाई, सिर्फ टॉप बच्चे बैठा करते थे. तो मैं उस सेक्शन में था और मुझे याद है कि जमीयत तुलबा इस्लाम के एक लड़के ने एक लड़की से नोट्स मांग लिए. तो वो कई दिनों कई हफ्तों तक उस पर गुफ्तगू होती रही. उसकी वालिदा आ गई कि इसने मुझसे, मेरी बेटी से डायरेक्ट नोट्स मांगे हैं और वो इनडिसेंट बिहेवियर के दायरे में उस पर उसको बड़ा रेप्रिमांड किया गया. तो फ्रॉम दैट टाइम
to the time के जब अभी मैं लाम्स में क्लास में पढ़ा रहा था, तो उसमें कुछ बच्चियों ने आके शिकायत की, 2 मौलवी टाइप बच्चे आगे बैठे हुए थे, तो उन्होंने आके मुझसे शिकायत की कि इनसे कहीं पीछे जाके बैठे, क्योंकि अपनी नजरें नीचे करके देखते बैठे रहते हैं, तो अगर हमें देखना इतना ही बुरा लगता है तो इनसे दूर दबा हो जाए. So they were offended because they were not looking at the speakers. So whole variety of what is decent and what is not decent. Be decent. I mean, it's a simple adage. Please behave decently. There's a simple adage, simple maxim. It gives a command. The moment you say the sentence, it performs an action as well. It gives a command. But how is it to be deciphered? How is it to be understood in different contexts? So engagement with text, postmodernism obviously is a dangerous thing. उसमें बड़ा criticism भी होता है बाज़ दफ़ा. There are people who've tried to reconcile it. लेकिन obviously the dangers are there, because इस तरह हर आदमी interpret करेगा, तो जो textual authority थी वो कहाँ जाएगी, words कहाँ जाएंगे, उनके क्या meaning होंगे, reality के अपने बारे में, और जिस तरह हम चीज़ों को categorize करते हैं, मिशेल फूको का जो काम है मिसाल के madness के ऊपर, that's very important. I mean, we are living in an age where everybody is facing high tension because of high standards. Academia is a nightmare. It's no longer the luxury of the wanton scholar who would just wander about and not care for the world. Scholar is supposed to keep churning out papers and go through a certain discipline. It's no longer the laid back kind of. तो उस तरह के टेंस एनवायरनमेंट में हर बंदा गुजर होता है किसी न किसी मेंटल स्ट्रेस से, एंड द वे दीज कैटेगरीज आर इम्पोज्ड, कौन सेन है कौन नहीं है, जो उसके अंदर, एंड फूको वाज ऑब्वियसली वर्किंग ऑन होमोसेक्सुअलिटी, बिकॉज उसके यहाँ तो ये उसने जो उसने आर्कियोलॉजी ऑफ सेक्स के बारे में लिखी किताबें अपनी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइंड्स, और उसकी अगर आप देखना चाहें तो बड़ी अच्छी डिस्कशन चॉम्स्की के साथ है, जिसपे उसने डिबेट की हुई चॉम्स्की के साथ के स्ट्रक्चर कितना डेंजरस हो जाता है, अथॉरिटी कितनी डेंजरस हो जाती है. तो उसने यही बहस की कि जी पहले तुम इन लोगों को सिनर्स कहते थे, फिर तुमने इनको पागल बना के इनका इलाज करना शुरू कर दिया, अब तुमने इनको एक्सेप्ट कर लिया, इट्स ऑल योर कंस्ट्रक्शन, गुड वुमन बैड वुमन ये तुम्हारी कंस्ट्रक्शंस हैं, सोशल कंस्ट्रक्शंस हैं. और उससे अभी भी साइकाइट्रिस्ट किसको मैड डिक्लेयर करता है, यानी ये तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, एज अ टीचर, एज अ यूनिवर्सिटी टीचर हैविंग टॉट फॉर मोर देन 30 years. तो वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं तो जो बच्चा जो है वो फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किसी किस्म की डिसफंक्शनैलिटी क्रिएट कर रहा है, मे बी द पर्सन इज अ ब्रिलियंट पर्सन सेइंग समथिंग ब्रिलियंट, लेकिन अगर फैमिली की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो फैमिली में पेट्रियार्क्स ही होते हैं हमारे यहाँ आमतौर पर ज्यादा, बस हम बच्चियों की मिसाल ले लें, अगर वो शादी करना चाह रही है अपनी मर्जी से और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वो ले जाएगा कि जी वो ये बीमार है. And that power is there, and so many people have begun speaking out against that. So these aspects also became very, very important, how things are interpreted. And this was just a brief introduction to some of the ideas in hermeneutics or textual engagement. होती कैसे, where does the power come from? Obviously हर फील्ड की अपनी क्लीक्स हैं, और ये भी एक मसला है कि जो क्लीक्स बनी है उसमें डॉक्टर की जार्गन है, साइकाइट्रिस्ट की जार्गन है, वो अपनी जार्गन से एम्पावर भी होता है, उसकी ट्रेनिंग भी है, लॉयर की अपनी है, एंड वी ऑल नो हाउ दिस एम्पावर, मैनेजमेंट साइंसेस की अपनी है, साइंस की अपनी है. एंड one obviously way is to train yourself in some of the common sciences and to have that understanding. The other important thing is understanding how literature works critically, जिसको हम critical studies कहते हैं. So modern researchers not only need to acquaint themselves with hermeneutics so that when they come across words, when they open up a book, when they read something, they can understand where the person is coming from. अब मैं इसको अभी ये जो थियोरेटिकल आइडियाज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं प्रैक्टिकली रिसर्च में जब हम लिखने बैठते हैं, काम करने बैठते हैं, तो हाउ दे फिगर, वो मैं इस सेशन में या अगले सेशन में उस पर बात करूंगा.
Yeah, how they become important and how these theoretical ideas then relate to us in research. So critical, May I just pitch in here for a second? Ji, certainly, This is please. Musarat. Ji, please. Dr. Saab, absolutely on spot what you're saying, but see, there is one more thing that I think you need to also mention, which is, etymology. जब हम words को पढ़ रहे होते हैं, हम उसकी etymology को कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि in our context हम disregard करते हैं. So अगर हम सिर्फ वर्ड्स की एटमोलॉजी को ही देख लें और हम उनका थोड़ा सा डायक्रॉनिक, हम हिस्टोरिकल देखें कि वर्ड जैसे क्रॉसॉन है या पॉश है, अब ये वर्ड्स की अब ये कहाँ से आए हैं वर्ड्स और इनकी इंटरप्रिटेशन कैसी है, तो इंटरप्रेटिव पेडागोजीज जिनकी आप बात कर रहे हैं, I feel that this is something that if you highlight this in this session, it will be really good for the rest of the audience. Thank you. Thank you so much for that intervention. बिल्कुल वो भी एक aspect है critical studies में, मैं उसी पे आ भी आता हूँ. But let me first of all address this question briefly. Critical studies में तो obviously it's much more than just etymology. Etymology is an important aspect. आप अदब को कैसे देखते हैं, टेक्स्ट को कैसे देखते हैं, आप किस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट को स्टडी करते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है. अब मिसाल के तौर पर एटिमोलॉजी की उन्होंने बात की, तो हमारे यहाँ हमारे डिस्कोर्सेज में एक बहुत बड़ा जो इंटरवेंशन हुई एथिक्स के दायरे में, और एथिक्स से मेरी बात रिलीजियस एथिक्स है, वो गुलाम अहमद परवेज साहब ने की थ्रू दी आइडिया ऑफ एटिमोलॉजी. जी कुरान मजीद के अल्फाज जो है उसको एटिमोलॉजी में देख के उसको देखें. But then there are counter criticisms as well, which I'm not saying which approach is right or wrong. We need to be aware of those approaches, because if you're not aware, तो फिर आप एक ही आइडिया को लेके बैठ जाते हैं, and your reader at an international level realizes कि आपका बिल्कुल myopic vision है. Like etymology के used as a basis for interpretation became very fashionable about 30-40 years ago. और उसका बड़ा रोल रहा खास तौर पर गुलाम परवेज के बाद फिर अफीउल्लाह शहाब एंड सो मेनी अदर्स. बहुत से लोगों से मैं खुद एंगेज करता रहा हूँ उस जमाने में, बहुत सारे काउंटर हमारे हुए. तो उस पे जो काउंटर क्रिटिक उसके ऊपर थी वो ये थी कि देखें एटिमोलॉजी से आप बेसिकली etymology is part of mnemonics. It helps you to understand the word, to memorize a word, to understand its connotations at different points of time. लेकिन जैसे ही वर्ड जो है किसी सेंटेंस में और सेंटेंस किसी पैराग्राफ में और पैराग्राफ किसी किताब में और किताब किसी माहौल में लिखी जाती है, तो असल चीज जो मीनिंग क्रिएट करती है वो यूसेज है, ना कि एटिमोलॉजी है. ये भी एक काउंटर क्रिटिसिज्म है. मिसाल के तौर पर देखें, वर्ड आप देख लें, लेट्स से ऑर्थोपीडिस्ट. तो अब पेडोस जो है वो बच्चे को कहते हैं और ऑर्थो सीधा करने को कहते हैं. 16th सेंचुरी में जो ऑर्थोपीडिस्ट होता था वो एक बर्तानिया में खास तौर पे एक बीमारी बच्चों को बहुत लग गई थी जिसमें स्पाइनल कर्वेचर खराब होता था बच्चों का. तो ऑर्थोपीडिस्ट या पीडियाट्रिशियन अभी भी उसी से निकला है, इसके दूसरे रूट से. तो ऑर्थोस जो है वो यूनानी में उसको सीधा करने को, पेडोस बच्चे को कहते थे. तो ऑर्थोपीडिस्ट उस जमाने में वो डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन थी कि जो स्पाइनल कर्वेचर बच्चों का ठीक करता था. आज अगर मैं किसी को कहूं कि मैं ऑर्थोपीडिस्ट के पास जा रहा हूं और उससे मुराद वो ये लेने की कोशिश करे आज के जमाने में कि मैं स्पाइनल कर्वेचर के बच्चों के स्पाइनल कर्वेचर के स्पेशलिस्ट के लिए जा रहा हूं, तो दिस विल बी क्वाइट फार मूव्ड from an understanding of the reality. So these ideas are important, as Musarat pointed out. लेकिन इनकी अवेयरनेस, मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो द लिटरेरी एस्पेक्ट्स. लिटरेचर की स्टडी जो है, ये एक जमाने में बहस थी कि ये अदब का क्या मतलब जरूरत है, लेकिन इस वक्त तो अब मॉडर्न साइंस में अंदाजा हो गया ना कि
प्योर साइंसेस के भी जो डेफिनेशंस हैं, आइडियाज हैं, वो बेसिकली टेक्स्ट वर्ड्स ही में एक्सप्रेस किए गए हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल आइडियाज वर्ड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट हो रही है. नॉट अंडरस्टैंडिंग वो जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म का दौर है, वो खुद साइंटिफिक एपिस्टीम्स के लिहाज से, साइंटिफिक एपिस्टेमोलॉजी, हाउ वी बिकम सर्टेन अबाउट certain aspects of knowledge, वो तो उसमें भी बड़े criticisms लॉजिकल पॉजिटिविज्म में आ गए. यानी एक आइडिया ये था कि जी वही एपिस्टीम वैलिड होती है जो साइंटिफिक, और साइंटिफिक एपिस्टीम क्या है कि जो चीजें ऑब्जर्वेशन से या अपने सेंसेस से वेरीफाई की जा सकती हैं. तो पै दर पै क्रिटिसिज्म से ये साबित हुआ कि दिस इज नॉट हाउ ह्यूमन बीइंग्स मेक देयर डिसीजंस. डिसीजन मेकिंग के रियल में जब आप आते हैं और उसमें जब नॉलेज आइटम या बिलीफ आइटम आप कह लें, ये डिस्टिंक्शन की जाती है, तो उसके बारे में आप ये तो कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो रैशनल नहीं है अगर वो किसी और एपिस्टीम के जरिए से कायम की गई हो. मिसाल के तौर पर एक डिफरेंट एपिस्टीम में आ जाएं, तो हमने सब लोगों ने यहाँ जो बैठे हुए हैं अपने माँ बाप को अपना माँ बाप तस्वुर किया हुआ है बगैर डीएनए टेस्टिंग कराए. दैट्स अ वेरी अनसाइंटिफिक अप्रोच. तो वो जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि भाई बाकी दुनिया में जो हर जगह पे, मतलब अगर मेरे सामने एक ट्रक आ रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ एक सेंस पे रिलाई करके या दो पे रिलाई करके और उसको वेरीफाई नहीं किया, तो मैं यूं नहीं करता साइंस की दुनिया में, जिसको कार्ल पॉपर कहते हैं, कि मैं कहूं कि मे बी इट इज कमिंग, मे बी इट इज नॉट कमिंग, परहैप्स इट्स एन इल्यूजन, until either proposition is proved neither is a fact. So I rely on my inherited knowledge or the basic superficial knowledge until it is falsified. The same applies to so many other traditions. जो बहुत सारे एपिस्टीम्स में हमें खबर पे रिलाई करना पड़ता है, इंट्यूशन पे रिलाई करना पड़ता है. तो साइंस की दुनिया में जब हम आते हैं तो जो वर्ड्स की जब बात शुरू हो जाती है, तो जिस तरह प्योर साइंसेस में रियलिटी को स्टडी करने के लिए हमें दूसरे एपिस्टीम्स की पड़ती है जरूरत. सिर्फ महज वेरिफिकेशन पे हम रिलाई नहीं कर सकते, हमें और एपिस्टीम्स को भी देखना पड़ता है टू मेक रीजनेबल कंक्लूजन्स. इसी तरह वर्ड्स की जब हम बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं और टेक्स्ट की बात करते हैं, तो हमें स्टडी करना पड़ता है, लिटरेचर को हमें देखना पड़ता है, जिसको हम उर्दू में इल्म बयान, उर्दू या अरबी में इल्म बयान, फारसी में इल्म बयान या इल्म बदी कहते हैं, अंग्रेजी में आप इसको रेट्रिक कह सकते हैं. Sir, I'm so sorry to interrupt you, but we have to close this session in 5 minutes. Okay, so I'll just stop at this point. इसको फिर अगले में थोड़ा कंटिन्यू कर लेंगे. कोई क्वेश्चंस अगर हो तो अभी तक यहाँ कर लें. But the conclusion that I'd like to make is that a study of these aspects of language, कि language अपनी इस फाइनर न्यूएंसेस में, यानी वो जो नोशन था ना कि पोइटिक लैंग्वेज जो है वो एम्बिगुअस है, विंटगेटस्टाइन वगैरह का जो पूरा तस्वुर था वो खत्म हो गया. बल्कि यहाँ एक जमाने में लाहौर में आए थे मौलाना वहीदुद्दीन खान, अब तो उनका इंतकाल हो गया. तो one of the highest award achievers of one of the most well known Indian scholars, तो वो यहाँ गुफ्तगू कर रहे थे. तो I was a young man at that time. तो वो बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जी वेस्ट ने बड़े जोर से emphatically he said कि जी वेस्ट ने तरक्की इसलिए की है क्योंकि there has, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि there has been the death of metaphor in the Western discourse. तो मैंने कहा that's not metaphorical. ये जो आर्टिकल का टाइटल है ये metaphorical नहीं है. So this whole notion has gone away. Understanding the complexity of language is itself a major requirement to decipher anything ranging from Socrates to Jacques Derrida, or from Wittgenstein to Karl Popper in the realm of science, or in social sciences. पॉल सैमनसन की इकोनॉमिक्स 20 साल पढ़ते रहे लोग, वो इस जबान में नहीं लिखी गई थी इकोनॉमिक्स की, के डेविड की जबान हुआ करती थी. So I'll just stop at that for a little bit. Asif, thank you so much. From listening to your talk, I mean, if I were to conclude, what you are saying is that to engage with the text, one has not to go only beyond the language, but the different historical stages,
that have come through. You're talking about engaging with the text, not only with your senses, but looking at it beyond, in the context of beyond the text context. I mean, you're talking about, it could be space, it could be time, it could be different, variations which actually affect how you engage with it. And I think in your talk, you also state the point that when you make when you engage with the text and make a statement, then you are also at the same time aware of what out of context things you have not considered while you have engaged with the text. So you because you can only, for example, a language person might be very well able to do the language connotations and the stages it went through. A science person might be able to do it from the point of science. So I think if I am doing it as an education person and I engage with the same text, perhaps I should also state that there are possibilities that exist beyond this context which I have considered, that have not been considered in my engagement with the text. Is that what you're saying as well? What I'm saying is that in modern research, whether you are a science person or a social sciences person or a humanities person, आपको ये interdisciplinary approach और मतलब literature review के बगैर आप solid research कर नहीं सकते. That's one point. The second point is कि literature के साथ engage करने के लिए आपको ये interdisciplinary approaches चाहिए होती हैं. अगर आप science के आदमी हैं तो आपको humanities पढ़नी चाहिए, humanities हैं तो आपको science की चीजें पढ़नी चाहिए. और ये कुछ basic disciplines हैं कि जो अब बाहर की दुनिया में even स्कूल लेवल पर वो ले आए हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि they know कि इस ज़बान में गुफ्तगू की जाएगी. इस ज़बान में अगर आप गुफ्तगू नहीं करेंगे तो आपकी बात को तवज्जो नहीं मिलेगी, वो डेप्थ नहीं समझी जाएगी आपकी बात में, और आप दूसरे की बात को भी सही तरह नहीं समझ पाएंगे. सो इस वक्त जो ज़बान बोली जा रही है, द वोकैबुलरी दैट इज इन यूज, उसमें आपको ये चीजें पढ़ने के बाद ही आप अच्छे तरीके से साइंस पर गुफ्तगू करेंगे, आप अदब पे गुफ्तगू करेंगे. इवन सोशल साइंसेज रिसर्च जहाँ पर आप डाटा कलेक्शन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उसको भी करने के लिए लिटरेचर रिव्यू चाहिए होता है, और लिटरेचर के साथ एंगेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ वाकफियत इन डिसिप्लिन से, जिसमें क्रिटिकल स्टडीज, बेसिक फिलॉसफी, hermeneutics, ये वो चीजें हैं कि जो पढ़ना अब रिसर्चर्स के लिए लाजिम हो गया. This is what I want to say. So I think that is an excellent takeaway. And for me also, the point you made about how the context on how the text in which the text is placed, and you might interpret it differently given that context, I think was a very, very crucial point to understand. I have some questions over here. I don't see many questions in the chat. I did state something similar to what I've cited just now. There is one by Miss Ira from Political Science Department, FC College. She's saying, am I right to understand that the question of validity will be fluid and open to multiple interpretations given these various standpoints? It leads to developing several sub-worlds of interpretations. Very good question indeed. जी बिल्कुल ऐसा ही है. और आजकल जो इन थिंग है, मैं तो खैर आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि जो एक एकेडेमिया में पढ़ी जाती हैं, कही जाती हैं, जो ज़बान की जाती है, बोली जाती है, उस पे ये बहुत बड़ी बहस है कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, मल्टीपल मीनिंग. इसमें मिसाल के तौर पर मेरी फील्ड में एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब आई, हार्वर्ड के एक स्कॉलर, उनका हाल थोड़ी देर पहले इंतकाल हुआ. किताब उनके पोस्टमसली छपी उनके मेरे ख्याल इंतकाल के बाद. उसका नाम है व्हाट इज इस्लाम. तो उसमें उन्होंने बहस किया कि इस्लाम एक मोनोलिथिक होल नहीं है, कई डिफरेंट काइंड्स ऑफ इस्लाम है. उसमें शराब पीने वालों की भी इस्लाम है, उसमें दूसरे भी एंड हिस्टोरिकली सूफी इस्लाम है, वहाबी इस्लाम है, एंड सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ इस्लाम्स एंड ट्रेडिशंस, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस. तो मीनिंग्स की मल्टीप्लिसिटी क्रिएट होगी, और जो खतरनाक बात जिसकी वजह से पोस्ट मॉडर्निज्म से लोग डर जाते हैं, वो ये है कि फिर ऑब्वियसली रिलीजन में भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी, कुरान की भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी, कोई किसी को फॉलो कर रहा होगा, किसी को फॉलो कर रहा होगा. तो ये होगा. लेकिन जो इस आपके सवाल के जवाब में बात है, जो मैंने शहाब साहब से कही थी जब वो जिंदा थे,
हमारी वही McGill में मुलाकात हुई थी, जब अपनी किताब को प्रेजेंट करने आए थे। तो मैंने कहा ये भी एक रियलिटी है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग्स विल बी क्रिएटेड एंड दैट्स ओनली नेचुरल। कि ह्यूमन बीइंग्स हैं तो डिफरेंट मीनिंग्स होंगे, किसी को कोई वैलिड लगेगा, किसी को भी वैलिड लगेगा। जहां भी जितनी अथॉरिटी आपकी और जितनी फ्रीडम आपको है उसके लिहाज से आप बिहेव भी करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्टेस्टेशंस भी रहेंगी। क्योंकि जैसे ही आप थ्योरेटिकल दुनिया से रियल दुनिया में आते हैं, तो आपको कोई फैसला तो करना है ना। मिसाल के तौर पर मेरे यहाँ इस काउच पे बैठ के जो अक्सर मुझे बातें करना पड़ती हैं, जो मेरे फॉर्मर स्टूडेंट्स या दूसरे लोग आते हैं सवाल पूछने के लिए, उनमें जो मोस्ट कॉमन है वो या तो सूद के और टैक्सेशन के मसले पूछने के लिए लोग आते हैं, या तलाक और डिवोर्स के पूछने के लिए आते हैं। तो उसमें एंड पे मतलब अल्टीमेटली एक सवाल ही होता है, जब खास तौर पे मर्द हजरात जो है मूछ को ताव दे के 3 तलाकें दे चुके होते हैं, उसके बाद पूछते हैं जी 3 हुई या 1 हुई। तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू आगे सामने, अल्टीमेटली या तो तलाक हुई है या नहीं हुई, या तो उसको बीवी के तौर पर उसने लेके जाना है या नहीं लेके जाना। सो जहां पर कन्फेशनल अप्रोच होती है रिलीजन की या किसी भी चीज की, चाहे वो साइंस हो, दवा आपको देनी है नहीं देनी, आपको फैसला करना है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आपको फैसला करना है, वहां पर कॉन्टेस्टेशंस होंगी। और ये जो जिन डिसिप्लिन्स का मैंने जिक्र किया, इसकी अहमियत भी यहीं से बनती है कि वो पावर अब क्रिएट होलीनेस से नहीं होती, वो अब चर्च में पोप बनने से नहीं होती, वो पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन से होती है। और इसकी मिसाल ये है कि आपके सामने जो एक शेर पढ़ा जाता है, मिसाल मैं आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, अप्लाइज इक्वली टू लॉ, अप्लाइज इक्वली टू मैनेजमेंट साइंसेस। आपके सामने एक शेर पढ़ा जाता है और आप कहते हैं यार ये इसका मतलब तुमने सही नहीं बयान किया, इसका ये मतलब नहीं है, दूसरे कहता है इसका ये मतलब है, तो कॉन्टेस्टेशन शुरू हो जाती है ना। तो वो कॉन्टेस्टेशन आप कैसे डिसाइड, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो अब 8 मुख्तलिफ, इसको सनत ईहाम कहते हैं अदब की जबान में, 8 मुख्तलिफ मतलब इसके निकलते हैं। तो ये बहस हो सकती है ना कि कौन सा मुराद है, ये भी बहस हो सकती है कि ये आठों के आठों ही मुराद है। ला तकरबु जिना से क्या मुराद है, रिबा से क्या मुराद है, जो लॉ जब आपको डिफरेंट मतलब सेकंड शेड्यूल आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का निकालें, उसकी इंटरप्रिटेशन पे ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं कि जिसमें बहस हो रही होती है कि ये एग्जाम्पशन के दायरे में आता है या नहीं आता, लेकिन कॉन्टेस्टेशन होगी। और कॉन्टेस्टेशन वही मनवाता है मॉडर्न टाइम्स में कि जिसके पास पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन होती है, या मार्क्सिस्ट थ्योरी के मुताबिक ताकत वैसी इतनी होती है कि वो जो जो कह रहा था वो मान लिया जाता है। तो देयर ओनली आसिफ, इसी से सॉरी वो क्योंकि योर नेक्स्ट सेशन इज आल्सो ऑन अ डिफरेंट लिंक एक्चुअली, तो मैं 2-3 चीजें फटाफट, एक क्वेश्चन और था कि हाउ डू वी प्रूव, एंड आई थिंक दिस यू हैव एक्सप्लेन्ड इन व्हाइल यू हैव बीन टॉकिंग नाउ, कि हाउ डू वी नो दैट अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट वी आर मेकिंग और इंटरप्रिटेशन दैट वी आर डूइंग is true. And I think you have already said that there is nothing right or wrong or true about anything. It's how you contest it and how you engage with it that will create the meaning. And I think you explained that within your talk. We will not go there. There is also another requirement where they I'd say, like to address that question though in the as well, soon I as know it's a very interesting question, but we as are soon as running we out of begin the time. next Ji. session, so I'd like to address that. Are we Ji. going to have the same audience or a different audience? No, there might be different audience. Different people have registered for the next one as well. Okay. So हम उस link को शुरू कर रहे हैं on another, so that people are not disappointed. You may continue. That is why we were in a hurry to close it. जी. जी मैं वेरी ब्रीफली मुझे अपने लेवल पर जब फैसला करना होता है और मेरे पास अथॉरिटी भी होती है, ताकत भी होती है, तो फिर तो इट्स व्हाट कन्विंसेस माय कॉन्शियंस, कुड बी एनीथिंग बट मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स आर कन्विंस्ड बाय द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन। जब आप सोसाइटी में आते हैं तो देयर आर ओनली 2 वेज, आइदर जिसको अल्लामा इकबाल ने भी रिकंस्ट्रक्शन में कहा ना कि वो जो इजमा का पास का कॉन्सेप्ट था, दैट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट, यानी मेजॉरिटी वोट से आपके रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड कर देंगे, वो लॉ बन जाएगा। और तीसरा तरीका जो दुनिया में हमेशा एंशिएंट टाइम से रहा है कि वो आप ताकत से मनवा लें। मुझे याद है मैं एचएसएन से पहले कैथीड्रल में पढ़ा करता था, और क्योंकि राजपूत पठान ट्रेडिशन का आदमी था, अभी इतनी तरबियत हुई नहीं थी, बचपन की बात कर रहा हूँ,
तो मेरा एक दोस्त था, तो हमारी सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की डिविनिटी पे बहस होगी, तो वो कहने लगे नहीं अल्लाह के बेटे थे, मैंने कहा नहीं बेटे थे। तो I got hold of him and I gave two smacks on his face. तो मानो, तो वो मान गया। तो अल्टीमेट तरीका तो मनवाने का फिर यही है ना, लेकिन उससे पहले या तो कंसेंसस होगा, मेजॉरिटी ओपिनियन क्रिएट किया जाएगा, उसके लिए तकरीरें की जाएंगी, लॉज बनाए जाएंगे, और पर्सनल लेवल पे जहां मुझे चॉइस है, तो ये decency requires कि human beings now get out of that violence and try to convince each other, and the most powerful tool that we have to convince is the power of words. It seems we have to end this meeting to start the next one. There were a couple of questions that had come to us and we had passed them on to you, and I think you have addressed some of them. There were some questions that you have asked for, but they are not a part of engagement with the text. They are a part of reference writing, and they are a part of research writing, and so on and so forth, and they will be handled by and by. Asif, would you like to make some closing statements so we can move on? इसमें कुछ उन्होंने किसी ने किताबें भी मांगी हैं, कुछ philosophy की, which they think would be good readings.